evening, students. Next chapter is the frequency diagram, histogram, polygon, and ogive. Okay, so today already we have discussed in the last previous videos as well as the last chapters that what is frequency diagram. Okay, now we are talking about the presenting of data. Okay, so how to present the data? Presenting the data is in the form of diagram. So here I am talking about frequency diagram means presenting the data in a diagrammatic form is called frequency diagram. Okay, so today I am talking about the three diagram: histogram, polygon, and frequency curve. There is a little bit difference between the three. Okay, already we have in the previous video, if you will see, I have already discussed about the bar diagram. Okay, so let us start with the histogram. Histogram is a graphical presentation of frequency distribution of a continuous series. Okay, तो histogram क्या है? Graphical presentation है किसकी? Frequency distribution. I've already talked about the frequency distribution. Whenever the class intervals are given, this is called frequency distribution. तो जब आप अपने class intervals को एक graphical presentation में continuous series को present करते हैं, this is called histogram. Okay, so we have a two type of histogram. Histogram of equal class interval as well as unequal class interval. Okay, so by the name it has been clear to you. जहाँ पर equal class है, equal class means 0 to 10, 10, 20, 20, 30. So if you will see, the difference between the three is 10, 10, 10. Okay, lowest minus lower limit and upper limit. So upper limit minus lower limit, that is 10, 10, 10. So we are getting the equal class interval. But if you will see here, this is called unequal class interval. The difference between 10 and 15 is 5. 15 to 20 is 5, but 20 to 30 is 10. So in equal class interval, this is simple to make a diagram. बस difference क्या होता है कि जो बार डायग्राम में होता है, आपके जो रेक्टेंगल्स हैं, जो बार्स हैं, वो आपस में जुड़े नहीं होते हैं. These are not stick with each other. But histogram जो है, उसमें आपके डायग्राम जो है, आपके जो बार्स हैं, रेक्टेंगल्स हैं, वो जुड़े होते हैं. Okay, so equal is simple. Okay, simply you are showing it. Unequal is I just tell you how to deal with the unequal class interval. Okay, so unequal class interval, suppose you will get the unequal class interval, just keep it in your mind, students. Never ever this will be given in the examination that this is the unequal class interval. You are supposed to be find it by your own self. आपको खुद देखना पड़ेगा कि इक्वल क्लास इंटरवल है या अनइक्वल क्लास इंटरवल है. तो अनइक्वल क्लास इंटरवल से कैसे डील किया जाता है? देयर इज अ एडजस्टमेंट फैक्टर फॉर एनी क्लास. ओके, एडजस्टमेंट फैक्टर क्लास इंटरवल ऑफ क्लास कंसर्न क्लास. ओके, आई जस्ट गिव यू द एग्जांपल 0 to 10, 10 to 20 and just take 20 to 40. Okay, so class interval of concerned class. So what is the difference between two is 10. Okay, and lowest class interval, if you will see, the difference is 10, 10 and 20. But lowest class interval क्या है? 10 है. So 10 upon 10, that is 1. Okay, again 10 upon 10 is 1. But here the class interval of concerned class is 20, not 10, because the difference between 2 is 20, not 10. And lowest class interval तो आपका same ही रहेगा 10. So we are getting 2. So this is the adjustment factor for any class. Okay, let it see over here as well. Okay, example, suppose 0 to 10, 10, 20, 20, 30 and 36 is given to you. So adjustment factor 10, पहले तो आप सिर्फ difference देख लीजिए. The difference is 10, 10, 10 and 30. So I write it over here 10, 10, 10, 30. But lowest अगर आप देखो तो lowest क्या है? 10 है ना class interval आपका difference. ठीक है, तो lowest difference आपका 10 है, तो I have divided it with 10. So we got the adjustment factor 1, 1, 1, 3, and this is already given to you. Class interval as well as frequency is already given to you. You are supposed to firstly find out the adjustment factor and then you will calculate the frequency density. How to calculate the frequency density? This is calculated by frequency divided by adjustment factor. So frequency is 6, adjustment factor is 1. So we got 6. Same as it is 8 divided by 1, 5 divided by 1, and here 15 divided by 3. So frequency density is 5. So we got the frequency density is 6855. Just keep in your mind, student, we are going to show in the histogram. जब हम histogram बनाएंगे बच्चे, हम ये show करेंगे, ना कि ये या ये. इनमें से कुछ नहीं show होगा, आपका ये वाला show होगा. I'll just show you how to
make a histogram. Okay, so for making histogram, on OX axis I have shown the marks, OY axis I have shown the number of students. So आई होप इट इज़ क्लियर टू यू. प्रीवियस वीडियो में भी मैंने आपको बताया कि ग्राफ कैसे बनाते हैं. ठीक है, OX एक्सेस आई हैव टेकन जी. इफ़ यू विल सी हियर 0, 10, 10, 20, 20, 30, 30, 60. So better to take a difference of 10, 10, 10. You can take any difference, that is your choice. But हमने जैसे पढ़ा है कि ग्राफ आपका बहुत छोटा या बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, तो बेटर है आप एक जर्नल डिफरेंस लें. सो आई हैव टेकन 10, 10 डिफरेंस, 10, 20, 30, 40, 50, 60. And here the frequency density is 6, 8, 5, 5. So instead of taking 2, 4, I have taken the difference of 3, 6, 9, 12, 15. So just see over here 0 to 10. Okay, class interval is 0 to 10. So what is the frequency density over here? 6. So from 0 to 10, just write 6. 10 to 20, we have a 8. And 20 to 30, we have a 5. Okay, now ये बाकी सारे क्लास इंटरवल तो आपके सेम थे. सो आपका जो बार है, रेक्टेंगल्स हैं हिस्टोग्राम के, वो इस तरीके से बने. बट हेयर you will find the class interval, the difference is 30. So how to show it? Frequency density is 5. So 30 to 60, we will show over here 5. Clear? And I have mentioned the number also here. ठीक है, तो इस तरीके से हम अपने हिस्टोग्राम को प्रेजेंट करेंगे. ओके, आई होप इट इज़ क्लियर टू यू. फाइन. सो इन अ हिस्टोग्राम, अगर आपको हिस्टोग्राम समझ आ गया तो देयर इज़ नो डिफ़िकल्टी टू नो अबाउट द फ्रीक्वेंसी पॉलीगन एंड फ्रीक्वेंसी कर्व. बहुत आसान है. ठीक है, अब मैं आपको एक ही डायग्राम में जो है, एक ही ग्राफ में सारा बता दूंगी कि किस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है, सो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन. फ्रीक्वेंसी पॉलीगन क्या है? ऑल मिड पॉइंट्स इंडिकेशन फ्रीक्वेंसी ऑफ डिफरेंट क्लासेस जॉइन टू मेक अ ग्राफ विद द हेल्प ऑफ अ स्केल. ठीक है, जब हम मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है, व्हेन वी आर ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स, ओके, एंड ज्वाइनिंग विद द हेल्प ऑफ अ स्केल इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी पॉलीगन. ठीक है, आई जस्ट शो यू हियर. ठीक है, जस्ट सी ओवर हियर. Okay, on OX axis I have shown the marks, OY axis I have shown the number of students. ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन. अब क्या हुआ? बिल्कुल हमने हिस्टोग्राम बनाया. ठीक है, बार और हिस्टोग्राम में मैंने आपको पहले भी बता दिया, बार आपके रेक्टेंगल्स डिफरेंस में होते हैं, साथ में चिपके नहीं होते हैं, बट दीज आर स्टिक विद ईच अदर. ठीक है, तो 0 to sorry, I have written the wrong over here, 20, 30 and 40. ठीक है, तो suppose 0 to 10 is 5. Okay, 10 to 20 is 10, 20 to 30 is 15 and 30 to 40 is 20. Okay, तो हम इस तरीके से पहले हिस्टोग्राम बना लेंगे. नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हिस्टोग्राम एंड पॉलीगन? इन हिस्टोग्राम वी विल मेक ओनली rectangle, but in polygon we are going to use a scale and joining all the midpoints over here. So if you will see, I am joining all the midpoints over here with the help of